वेस्ट यूपी प्रेसिडेंट ऑफ पाई एंड आज की मैं मॉडरेटर हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपनी पाई जो हमारी एसोसिएशन है उसके बारे में, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नए भी जुड़े हुए होंगे, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि वो पाई के बारे में समझे। जो हमारी पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन है, इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन for education leaders and other stakeholders with purpose to facilitate knowledge sharing, empower education leaders to provide financial aid to those educators who are jobless and instill leadership in education sector. पृथ्वी एसोसिएशन इंडिया का जो मिशन है वो है पृथ्वी अभ्युदय एसोसिएशन इंडिया इज वेरी क्लियर. This association will provide financial assistance in various ways to all the directors, principals, and teachers of India. All of you have seen very closely the situation arising in the lockdown, and in these days, the most pathetic condition has been that of our teachers community. This association will not be the part of my kind of court case or any other type of are not right. The main objective of this association is to strengthen our educator community by giving them financial assistance. अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो हमारे इस संस्था के फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सर, उनके बारे में बताना चाहूंगी. डॉक्टर हर्षवर्धन सर, he is the founder and director of PI Association and Shri CSM Public School, Dhailan District, Pune. जो डॉक्टर हर्षवर्धन सर हैं, आप फाउंडर चेयरपर्सन है, मैंने बता दिया पृथ्वी एसोसिएशन के. दिस एसोसिएशन इज करंटली, मैं अभी बता चुकी हूँ हमारी एसोसिएशन क्या कर रही है. करंटली वर्किंग इन मोर देन 10 कंट्रीज, मोर देन 10,000 academicians are benefit under the banner of association and under the banner of Dr. Harshvardhan sir also. Prithvi Abhyuday Association is a non-profit organization for educator leaders. I have already told you. Dr. Harshvardhan Singh has more than 10 years of experience in the field of education. He is a multi-talented personality and experienced consultant and instructor, educator, facilitator, motivator, and inspiring public speaker with a vast understanding and knowledge. Honored with more than 50 plus national and international awards. As Dr. Sarpalli Radhakrishnan, Rashtriya Shiksha Ratna Samman Educator of the Year 2021, 2021 World Best Mentor Award dedicated educationist, All India Education Award 2021, Dr. APJ Abdul Kalam International Award of Excellence 2021, शिक्षा पदम सम्मान and many more. एक अच्छी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और मैं ये भी मान के चलती हूँ कि जितने भी लोग हम लोग इस समय पाई में जुड़े हैं और जो हमारे नए फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो लिटिल बिट अवेयर है हमारे जो ये एक अच्छा कार्य के लिए जिसके लिए हम यहाँ सब जुड़े हुए हैं, एक अच्छे एम के लिए, एक अच्छे मिशन के लिए. तो बहुत ज्यादा ब्रीफ मुझे बताने की भी डिटेल में जरूरत नहीं है. आई थिंक ब्रीफ सफिशिएंट है. आई थिंक आई एम राइट सोनिया मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल. नाउ जैसे कि आप लोगों को पता है, आई एम द होस्ट ऑफ टुडे प्रोग्राम में. थोड़ा सा जो हमारी नेक्स्ट स्पीकर है सोनिया अंचंदानी मैम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी. डॉक्टर सोनिया अंचंदानी मैम, फाउंडर डायरेक्टर, ड्रीम अचीवर कैरियर काउंसलर, सर्टिफाइड पोस्ट प्रैक्टिशनर, AIEF certified global ambassador, member of Global Teacher Forum, National Counselor for Sports Education SPAA India, State President for WICCI Education Policy Council, National Editorial Team PI की member है मैम. गुजरात ट्रेनर, ग्लोबल फाउंडेशन फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड रिसर्च, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर द स्पोर्ट्स कोलैबोरेटिव इंडिया. थोड़ा सा ये तो सारे मैम के बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स थे. आपको मेरी भारी भरकम आवाज से भी लगा होगा, काफी भारी थे मैम. वी आर प्राउड टू हैव यू विद अस. हमें बहुत प्राउड की बात है कि आप इस पाई फैमिली का मेंबर हैं और हमें बहुत कुछ आपसे आगे भी सीखने को मिलेगा. आप डॉक्टर सोनिया अंचंदानी मैम पिछले 14 वर्षों से हमारे साथ एज एजुकेशन सेक्टर में जुड़ी हुई है. 11 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मैम को, इन काउंसलिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो.
एंड मैम ने 3000 प्लस स्टूडेंट्स को इन द स्पैन ऑफ 3 years काउंसलिंग की है, और बहुत सारे वेबिनार, काउंसलिंग सेशन, टॉक शोज की मैम होस्ट भी रही हैं और एज अ गेस्ट भी रही हैं और स्पीकर भी रही हैं। और मैम क्या कंटेंट फॉर ई मैगजीन एंड राइट ब्लॉग्स भी लिखती हैं, और इनफैक्ट हमारी तो सारी पाई की शायद मैम सारी चीजें मैम ही से ही जनरेट हो रही हैं। ई मैगजीन की मैम अच्छी मेंबर हैं हमारी प्रियंका मैम के साथ, एंड को ऑथर फॉर द एंथोलॉजीज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट भाभा इंटरनेशनल पब्लिकेशन के साथ भी जुड़ी हुई है मैम। और मैम की एक स्टोरी थी, बुक मार्वलस मेस्ट्रो रिटन बाय सर्दी दत्ता। उसको मैम ने शायद द स्टोरी हैज बीन फीचर्ड इन द बुक मार्वलस मेस्ट्रो रिटन बाय द सर्दी दत्ता। और एक जो और वर्क है मैम रिकॉग्नाइज बाय मैनी इंस्टीट्यूट के द्वारा, मैम का जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज किया गया है बहुत सारे एनजीओ के द्वारा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब मैं नेक्स्ट बहुत ज्यादा ना बोलते हुए सोनिया मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप अपना स्टार्ट करें। जी, thank you Archana ma'am for a wonderful introduction. It was a beautiful opening that you've given me. Good evening to one and all. Well, I would only request you to give me a few seconds till I share my screen with you all for the presentation. Are you able to see the presentation? Yes, ma'am. Presentation It's is visible. okay. Yes. So today the session that we are going to have is on POSH Act 2013. Well, the POSH Act is Protection Against Sexual Harassment of Women at Workplace. It is prevention, prohibition, and redressal. Well, we have been seeing that women these days keep facing a lot of problems. And you know, it's very difficult for them to work in a very uncomfortable space. So let's discuss it in detail today. Well, POSH, stand up and speak out. We need to stand for our rights. We need to speak for them. Until unless we don't say that we are uncomfortable, nobody is going to pay an ear to us. Nobody is going to realize how we feel and what we are feeling. So, keeping all this in mind, the act was brought into existence. Now, let's study about how the act actually came into existence. What was the reason? What made the government think about it? What made the constitution think that this was really needed for protecting the women? The act formulated on 23rd April 2013 and got registered on 9th December 2013. The act has 8 chapters and 30 sections. It covers 3 areas, that is prevention, prohibition, and redressal. It is not gender neutral as it recognizes sexual harassment at workplace only against women employees, and the victim can only be a lady or a girl. Now, this is very important. We really need to understand that, you know, under this act, only a lady victim can file a case. Only she can go and give a complaint. So, even if the lady is working under a contractual basis, she is covered under this act. According to the act, it is mandatory for every company having more than 10 employees to constitute an internal committee. I will not speak much about it because, yes, Sharda ma'am is there. She will be telling you the briefing on the internal committee in a prescribed format. In case the number is less than 10, then the company needs to register with the local complaint committee. You know, local complainants, you can have it as a district registrar or whatever it is, the local body, the governing body over there. You need to register your company over there. But you need to have a prescribed format for it. Now, how did this act come into existence? There's a story behind this. We all must have also heard it. Actually, not a story. It is a true incident that took place. The act was developed keeping in mind the prevention of women from any type of sexual harassment or sexual abuse at workplace, as it is believed that one can work to their full potential only when they are given a safe and suitable environment to work. I think all of us will agree to it, right?
टुडे इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन एन एनवायरनमेंट, अगर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, मैं वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो शायद मैं वहां पर काम भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे खुद को डर लगेगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं अपने वर्क में भी 100% नहीं दे पाऊंगी और ना ही मैं वहां पर ध्यान से काम भी कर पाऊंगी, राइट? तो इट वाज initiated after the Bhavri Devi case, who was a Dalit social worker from Rajasthan and protested against child marriage. भवरी देवी के बारे में कई लोगों ने सुना होगा, स्पेशली जो लोग राजस्थान को बिलोंग करते हैं उन्होंने तो जरूर भवरी देवी का नाम सुना होगा. शी वॉज अ सोशल वर्कर एंड शी वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. एक्चुअली उनकी भी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ था कि दिस वॉज नॉट द एक्चुअल एज फॉर एनीबडी टू गेट मैरिड. They are very small. So she used to fight for the rights of children. And she used to try to stop the child marriages taking place in Rajasthan or anywhere, wherever she could reach out actually to. She was warned not to do so, but she stood against all odds and tried to stop the child marriage. उन्होंने, लेकिन आपको पता है जब लोग कुछ ठान लेते हैं, और भवरी देवी जैसे जो बहुत ही हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, उनको रोकना शायद पॉसिबल नहीं है. तो भवरी देवी वहां पर रुकी नहीं, ना ही वो किसी से डरी. उन्होंने जो काम अपने सर पर लिया था, उन्होंने उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाया और इसकी वजह से उनको कई सारी चीजें भी फेस करनी पड़ी. जब वो किसी के भी मना करने पर भी नहीं रुकी, she did not stop over there. That night she was gang raped by the upper class. Now she was from the Dalit class and there was an upper class. हर गांव में, हर कस्बे में अपर क्लास और लोअर क्लास रहता है, तो वहां के अपर क्लास ने उनका गैंग रेप किया. She approached the police to file a complaint but was told to stay quiet and no action to be taken. The next night she was not only again gang raped but also saw her husband brutally killed in front of her. और ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई अपने गैंगरेप के बाद पुलिस स्टेशन तक जाने की और कंप्लेन करने की, उनको बताने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ था रात को. लेकिन क्या हुआ? The police did not support her. She did not get any help. Instead, she was gang raped for the second time, and it was brutally gang raped, and she had to see her husband die in front of her. That was even more bad. She had no choice but to stay quiet and watch helplessly. But then an NGO, Vishaka, came forward to hold her hand and support and filed a petition on her behalf, and the women activists came into action through local newspapers. जब NGO आया सामने, देखा लोगों ने कि NGO उनको साथ दे रहा है, women activists भी सामने आई, local newspapers में काफी सारा उन्होंने आर्टिकल्स डाले जिसके थ्रू उन्होंने जागरूकता फैलाई. द केस वाज देन गिवन टू CBI. उसके बाद केस CBI को किया क्योंकि लोकल पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं. बट एट द एंड द एफर्ट्स वेंट फ्रूटफुल एंड गाइडलाइंस बिकेम द बेसिस फॉर 2013 लॉ, and that law was passed. So this is how this law came into existence, the POSH Act. Now, examples of sexual harassment: physically blocking a person's movements or standing in the way, brushing up against a fellow colleague purposely, looking or glaring at one's body from top to head, following or stalking someone, paying extra attention to someone, making insulting remarks or comments on one's gender identity, sending unwanted mail messages, sharing pictures or posters of sexual nature at workplace, cracking jokes or narrating stories about sexual expressions with intention to cause you discomfort. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सबने देखी है होते हुए, राइट? शायद हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा या इतना अटेंटिवली उन चीजों को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप जब के बारे में जान रहे हैं तो हम इन चीजों पर जरूर ध्यान देंगे और जागरूक भी रहेंगे. नॉर्मली क्या होता है, जब हम कहीं पर काम कर रहे हैं, अचानक से कोई आके हमसे टकराता है. इवन हमारे साथ लोकल ट्रांसपोर्ट्स में ये कई बार होता है, जब हम बसेस और ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, कई लोग हमें घूर के भी देख रहे होते हैं, कई लोग यूं गुजर जाते हैं पास से, फिर कहते सॉरी मैम गलती से लग गया. मतलब इस तरह की कई चीजें हम लोगों के साथ रोज होती हैं, हम रोज फेस करते हैं किसी न किसी तरीके से.
These are certain things, that happen in the office atmosphere or our workplace. कोई आपको रोकता है, कोई आगे पीछे से हाथ रखता है, कोई आपको जबरदस्ती खींचना चाहता है, कोई आप पे कमेंट्स पास करता है आपके ड्रेसिंग सेंस पे, आपके कॉम्प्लेक्शन पे, या अजीब तरीके से ना कुछ मैसेजेस शेयर होते हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट. The Act defines a workplace very broadly. It is that a workplace is not only an office, campus, or complex. It includes every place that the employee visits in regard to work. It includes transportation facility provided, training programs, cafeteria, official dinners, get-togethers, travel, tour, everything. आप किसी एग्जीबिशन में अपने ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ऑफिस को रिप्रेजेंट करो, या आप अपना एग्जीबिशन होल्ड करो, आप ट्रांसपोर्टेशन में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, टूर पे हो, आप किसी पार्टी में गए हो जहां पर आपका ऑफिशियल सर्कल है, कोई डिनर है, कैफेटेरिया है, आपका कैंटीन है ऑफिस का, इस तरह से ऐसी कई जगह है जो भी आपका वर्क प्लेस ही कहलाएगा, बिकॉज यू आर ऑन ड्यूटी, यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ कंपनी एम्प्लॉई ओवर देयर. It is not on personal ground that you've gone. Now, for example, if we take a very small example, जो maids domestic help हमारे घर आती है रोज सुबह, उसके लिए हमारा घर भी work place ही है, right? That is a work place for her too, because she is coming and helping us out. We are paying her salary, so that is her workplace. Any department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institution, जिस तरह से आज स्कूल में टीचर्स हैं, उनका वर्क प्लेस है. Going to school, going to institute, going to the coaching classes, that is a workplace for them. They are working over there. They are being paid the salary for giving time over there, right? Which is established or owned, controlled, wholly or partially obtained funds provided directly or indirectly. Now, these are things that we need to keep in mind, Any private sector, organization, venture, undertaking, enterprise, society, trust, NGO, service provider carrying on commercial, professional, vocational, educational, entertainment, industrial, health service, financial activities, including production, supply, sales, everything is counted as a workplace for us. आप किसी एग्जीबिशन में हो, आप किसी सेल पे गए हो, आप किसी मार्केटिंग एजेंडा पे हो, एडवर्टाइजिंग फील्ड के साथ हो, आप कहीं पर पीआर भी कर रहे हो पब्लिक रिलेशंस के हिसाब से, भी आपका वर्कप्लेस ही काउंट होता है. So you need to be very careful what is a workplace, how it is defined. Now coming to sexual harassment at workplace, हमें एक्ट के हिसाब से भी कुछ चीजें ध्यान में रखती है. What constitutes a sexual harassment? Offering benefits, yes. कई बार हमने देखा है आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस मिलते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, उनको हाइक मिलती है सैलरी में, और उनका कोई काम समझ में नहीं आता तो भी बहुत तारीफ होती है उनकी, उनको ट्रांसपोर्ट दिया जाता है ऑफिस की तरफ से, XYZ, ऐसे कई सारी चीजें होती हैं. अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस, कोई आपके सामने बैठा है, आपको अजीब तरीके से एक्सप्रेशंस दे रहा है, जेस्चर्स दे रहा है जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं. थ्रेट्स, थ्रेट्स इज लाइक आप उन चीजों को ले रहे हो तो वो आपके लिए एक थ्रेट है, एक्चुअली एक वार्निंग है कहीं ना कहीं. You need to say no to such things. You need to retaliate to it, unless you don't scream out loudly, no, nobody is going to stop it. Nobody is going to hear to you. Visual conduct, again it goes to gestures. Verbal conduct, आपके ड्रेस पे कमेंट करना, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे कमेंट करना, और इस तरह से आपको कुछ वर्बल बोलना, जोक क्रैक करना. फिजिकल कंडक्ट मतलब बॉडी पोजीशन, आपके साथ लीन होके बैठना, लीन होके खड़े होना, आपके ऊपर हाथ रखना, आपका रास्ता रोकना, बलपूर्वक बीच में आके खड़े हो जाना ताकि आप कुछ ना कर सको. तो ऑल दिस इज देयर एज अ sexual harassment. Factors to be considered according to the Act. Now, when we are talking about the Act, there are 5 such factors we really need to keep in mind. When we are filing a complaint also, these are 5 things that are to be seen in the Act. Because according to this only, the complaint will be filed, and Shada ma'am will be giving you a precise detail about it in the coming part. According to section 2.2N, 5 factors need to be taken into consideration. Physical contact and advances.
making sexually colored remarks, a demand or request of sexual favors, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct or sexual nature. All these things need to be seen. And you need to mention it in your complaint that which out of this was there that happened with you. Based on that only the complaint is taken. What things can mount up to sexual harassment at workplace? अगर छोटी छोटी चीजों को नहीं रोका जाता है तो वो कभी बहुत बड़ी हो जाती है. हम बोलते हैं ना कि स्टार्ट में ही चीजों को रोक देना चाहिए. We need to stop it when it starts itself, because we don't want it to get bigger. It gets very difficult to amend. So conduct amounting to sexual harassment at workplace, whistling at someone, actual or attempted rape, actual or attempted sexual assault, touching an employee's clothing, hair or body, kissing sounds, howling, smacking lips, touching or rubbing oneself sexually around another person, unwanted sexual teasing jokes, remarks or questions, unwanted deliberate touching, leaning, tapping, pinching. ना जब हम ये चीजों को कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि हम कुलीग्स है, साथ में काम करते हैं, तो हमें लगता है ठीक है गलती से हो गया होगा, मे बी इट जस्ट हैपेंड, हम ध्यान नहीं देते. लेकिन अगर हम वहां पर उसको रिटेलिएट नहीं करते, हम वहां पर उसको मना नहीं करते, तो वो बढ़ता जाता है. बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है कि एक टाइम आता है कि हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और तब शायद बहुत लेट हो चुका होता है और हम इस स्थिति में नहीं होते कि अब मना करें. क्योंकि जब हम तब मना करते हैं तो व्हाट इज सेड, यू डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट बिफोर, यू डिड नॉट से एनीथिंग बिफोर, देन व्हाई आर यू कंप्लेनिंग ऑन इट नाउ? So these type of things come out later on when we retaliate to it. So it is always better to retaliate right in the beginning than making it a very big blunder for later on. मीटिंग कहाँ गई? हाँ. Yes. So this is how we need to really look into the act. हम लोगों को मतलब सावधान रहना पड़ता है, हम लोगों को चीजों को समझना पड़ता है कि हमें कहां पर हाँ ना बोलना है, वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ताकि जो हम लोगों ने फैक्ट्स डिस्कस किए उनकी नौबत ही ना आए और हमें आगे उसको एक बड़े डिजास्टर होने से बचाया जा सके. Well, Archana ma'am, this is from my side. Now I would like Sharda ma'am to take the platform from here. I would request you to introduce her, please. I'm kindly unmute. Archana ma'am, you are mute, ma'am. थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू सो मच. आज जो भी व्यूज आपने पोस्ट को लेके शेयर किए, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, हमें हमारे अधिकारों के बारे में, हमारी चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है कि हाँ हम उसके बारे में आवाज उठा सकते हैं. इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी वर्क करके मुझे लगता है शायद हमारे बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीजों के बारे में नहीं पता है. रियली इट्स अ वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच सोनिया मैम. अब मैं मेरी जो आज के नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर श्रद्धा चक्रवर्ती मैम, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी. शी इज द फाउंडर डायरेक्टर गोल्डन फ्यूचर काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी, and she is presently working as a PGT biology, more than 20 plus year of experience she is having. Certified career counselor, NLP practitioner, मेंबर्स हैं आप स्प्राउट एंड टोस्ट मास्टर क्लब की. सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है मैं. सर्टिफाइड पोश एक्ट 2013 ट्रेनर है. AIEF रिसोर्स पर्सन है, और इसके अलावा ऑथर और कैरियर एडवाइस गाइडेंस भी मैम देती हैं. वेरी गुड इवनिंग श्रद्धा मैम, एंड वेलकम इन आवर पाई फैमिली मेंबर्स, एंड वी फील वेरी मच प्राउड कि आप हमारी फैमिली का मेंबर हैं. नेक्स्ट ओवर टू यू मैम. Thank you so much, Archana ma'am, for such a wonderful presentation. I hope I'm clear and I'm clearly visible and audible too. Is it so? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you so much for the confirmation. And Sonia ma'am, what a presentation, eye opener. And I was just looking at your presentation and the way you were speaking. It was
Awesome. So Thank now you, let's ma'am. move- Thank you. And today I'll start with my next part. Let me share my screen. Okay, the screen is visible. So now there are many points which are covered by Sonia ma'am. So the unwelcome behavior towards gender diversity are not at all welcome. You have to stop it, and you are the one who can stop it. And how this evolution took place, she has already mentioned. I'll just talk about like how the ladder went up. Today we are here listening about the POSH Act 2013, but it was not like that from the beginning. Previously, we had some constitutional rights, everybody had. Then the Indian Penal Code came, and the Vishaka judgment was the wonderful, which gave the platform to the POSH Act, and wonderfully explained by Sonia ma'am. So now she has already explained, but I'll just start touch so that you understand what is the workplace. The place where you are working. Rightly said, it can be a dwelling place for a domestic worker, or like people like us, it can be a hospital or vocational educational institution, private sectors, and so on. But what is more important? It is also the place where you're working and where you're moving during your employment. For example, if I am a person related to an education center and I'm going to some other school for some presentation, then that other school or that other institution become my workplace. And if anything happens by chance, or maybe I was not that lucky that day, what happens? So I can file a sexual harassment case on the person. And who is the employer? It can be a manager, management, or the control who is controlling you, or the supervision. Employee doesn't mean just giving you job. There are many obligations which they have to look after for their employees, like safe work environment. Suppose like aggrieved. Who is aggrieved? A person, like for example, I'm complaining, I become the aggrieved. So they have to give them the assistance. Harassment treated as misconduct of service rule. Timely submission of report to the officers related to that. Then they have to also look into ICC or grievance redressal mechanism. They have to help in inquiry, and also it's, see, just now ma'am told, prohibition, you have to stop it unless you don't give or don't tell or don't give a particular direction to your employees about the sensitive topic. You have to keep on giving them either by posters or giving some orientation, which is very important, because the injection should be given timely. Otherwise it becomes expired and all, then we people forget. So this dose should be given regularly. And just now, who is an employee? Like for example, I'm an employee. So any person who is a regular, temporary, ad hoc, or an apprentice, like interns, now we call them interns, and or with or without remuneration, means there are many people who are working voluntarily. So they are also employed, or they are directly through an agent or a contractor. Like for example, in my institution now, they are hiring few fourth class employees like ayas and some helpers, like who are helping in keeping the school clean. So they are being hired. Now this school becomes their workplace, though they are coming through some other third party, but now the school becomes their the place of work. So I'm not going to work on this because ma'am has already explained a lot,
and all about this. How does the act outlaw like anything, anybody who's interfering in your work or threatening you? Okay, if you're not, like sometimes we hear, acha, we'll see you, that you don't get a job anywhere in this place. Understand, if you are not going to listen to what I'm saying to you, or my indecent behavior, if you are not allowing me, I will see that you will not get a job anywhere in this particular area. So this is again a sexual harassment, or you cannot threat anyone. So this is all, or making the environment so very hostile. People, that it's so difficult for you to work. It is also comes under this law. This law is very, very powerful. And just now, ma'am told like a demand or request for sexual favors or sexually colored remarks on your dress, on your body. So these are not welcome, and they are all under sexual harassment. Any verbal, non-verbal. If you are not saying, you're not using your words, but your signs, it's non-verbal. But if I'm understanding it as it's a wrong approach, I can go to my higher officers and talk about it. Are you understanding? It's not only verbal. POSH Act is very powerful. They have kept everything, either verbal, non-verbal. So now it is not on the intention, like, they are saying, I'm joking, I'm doing this. No. If like I feel that your intention doesn't matter, if you are doing, you're involved in this. So with this, I'm going to show you a small video, and please look into that, and just let's start with this beautiful video. उससे 3 साल पहले से हूं इस दफ्तर। मैं तो अपना जा रही थी चुपचाप, उन्होंने ही बात शुरू की। बात करना भी गुनाह हो गया, कमाल है। अब आदमी करे तो करे क्या? हुआ क्या, ठीक से बता। लंच टाइम हुआ तो मैं टिफिन लेकर आ रही थी, संतोष जी सामने से चलकर आए और मेरा रास्ता रोक लिया। अब रास्ता थोड़ी बदल लेंगे क्योंकि सामने से लेडीज आ रही। एक ही दफ्तर में काम करते हैं भाई, ये तो होगा। मैंने देखा उसके हाथ में खाने का डब्बा है तो मैंने पूछ लिया, आइए और साथ में लंच करते हैं। बस इतना सा तो बोला। कुछ बोला क्या? पहले बोला कि ये रंग काफी जच रहा है आप पे। फिर बोला आइए साथ में लंच करते हैं। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, पर मैंने उन्हें आराम से मना किया। मैं मनीषा के साथ लंच करती हूँ। शायद उनको बुरा लग गया। अब बुरा तो लगता ही है ना, ऐसा भी क्या है? उससे 3 साल पहले से हूँ इस दफ्तर में, इस पर भी कोई चीज होती है यार। रिस्पेक्ट अपनी जगह है। मैं समय पे अपना काम खत्म करती हूँ, सुबह टाइम पर आती हूँ, 1-8 घंटा एक्स्ट्रा भी रुकी हूँ मैं कई बार, और मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा। जानने लगी तो आपसे कहीं ज्यादा अच्छी दिखने वाली लड़कियां काम कर चुकी हैं इस ऑफिस में, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ये किस तरह की बात है? बात क्या है ना, इस सर पे चढ़ जाती हैं। अब लेडीज समझ के हम इनको डांटते फटकारते नहीं, तो इनको लगता है ये ज्यादा टॉप में।
और ऐसा कुछ तो बोला भी नहीं मैंने, मुझे लगा डर गई शायद, तो मैंने हंसकर समझाने की कोशिश की। अरे स्मिता जी और मैडम लोग भी हैं इस ऑफिस में, हम लोग कई बार साथ में बैठ के लंच करते हैं, तो इतना सोचिएगा मत इस बारे में। इतना सा बोला तो मुंह बना लिया, घूर के निकल गई वहां से। मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मजाक के नाम पे कुछ भी बोलेंगे क्या? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। अब स्मिता, वैसे इससे पहले कभी संतोष जी के बारे में ऐसा कुछ सुना तो नहीं है? हो सकता है तुझे ही गलत लग रहा हो। मेरा मतलब सोच ले एक बार। सब ठीक है ना? क्या सोच रही हो? जो हुआ वो गलत था या नहीं? गलती से था या नहीं? या हुआ भी या नहीं? सच तुम जानती हो, सोचो मत। स्मिता जी सब ठीक है ना? ठीक तो नहीं है, लेकिन हो जाएगा। I hope you all like this video. So what I wanted to say, your intention doesn't matter. What matters is that whether the person with whom you are behaving or you are saying something, whether she's comfortable or not. Okay, so the intention doesn't matter. Maybe he must be saying, but you saw the lady was feeling a little bit uncomfortable. So this is all about. So now, what is the complainant? Means the one who has aggrieved lady. How like she can do it? Proceed. So every organization, if it is more, there are 10 or more employees, so they have to set one ICC, Internal Complaint Committee. Of course, it should be headed by a woman. Okay, the woman should be the head of the committee. And if there are less than 10 people, there are not more than 10 employees, so they can go to the local complaint committees, okay, which is there in the city ward or the rural areas. And the complaint should be submitted in writing. It's not verbal. You have to give it in writing. If the aggrieved woman is not educated, then she is given the chance to get it written, write it from somewhere else, but it has to be written, and within 90 days, inquiry should be finished. It cannot linger. So within 3 months, it should be over. And now, what is the complainant entitled to? Like, for example, if I'm the one who has complained, then I become the grieved woman, and the person against whom I have complained becomes the respondent. Okay, so the district officer or the investigating ICC committee, I told you, now their work starts, because they have to complete the report before 90 days. So the action is taken against respondent, and he may be penalized according to the service rules. Every organizations, they have their service rule. A sum of money, a deduction from his salary can be done, and which is paid to the aggrieved woman or her legal heirs. Okay, maybe the lady is not there, maybe she's not present, or she's dead, so her legal heirs can act on it. They can also do it, and the money has given to them from whom? From the respondent, because there is a charge. She has to pay charge to the lawyer and so many things. And what is how is this compensation decided? Means how much money has this respondent is supposed to give. The mental trauma
or the pain or the suffering and the emotional distress caused to the aggrieved woman. Of course, she's going into trauma, she's in a pain, suffering. So it is decided according to that. And how much she has lost in her career opportunity. 90 days means 3 months. So in this way, the compensation is decided. And medical expenses, like she's feeling like she's suffering from the trauma or some pain, so she has to go to a psychiatric treatment or any doctor. So this money has to be given. How she will give? So this money is taken from the respondent's salary. The income and the financial status, maybe she is has to pay some installments or some lump sum money. So in this way, it is decided. Now, every employer, means the organization, it's their duty. They should provide a safe environment. If the environment is safe, everybody loves to go to work. But when we know, if I'm going to work and someone is there who will be harassing me every day, the productivity goes down. So this is the duty of an employer, of the employers. Display the order constituting the internal committee in the prominent place where everybody can see. So this is the duty of an employer. Undertake the workshops and make the employees sensitize about the so very important topic, that is the POSH Act. What are the do's and don'ts? And provide necessary facilities to the internal committee or local committee, because the aggrieved and the respondent are working in the same place or maybe different place. Because if like they have moved to some other place for their workplace, I told you, for example, a salesman is going to another company, so that particular company becomes its workplace at that particular time. And if some mishap happens to her at that particular time, so that organization should also help in the local committees also. I hope you are all enjoying and having this important and topic and a very lighter note, and but still a very powerful topic. So what are the duties? I told you they should assist and they should give relevant information, because now the ICC is just like, a committee of like judge people who are going to decide. So they should give, the employers should help the committee. They should not hide anything from the committee, and provide assistance to the woman if she chooses to file complaint under the penal code, Indian Penal Code. She can go to the police station. If she's not satisfied also, she can move there. So employers should give her full support. Okay. And now maybe the complaint is false. The lady has some, some jealousy or something like that, and she has given a false complaint. What then? She's not given any freedom. She's not given any, like, okay, you're a woman, now you go, no problem, even if it was false. No, the action is taken if she's found that the complaint was a fake complaint. Okay. And she is also not part from this. And now a mere an inability to, suppose, like if she's not able to give the proper evidence, so it is not treated as false complaint. But if she is wrong, if the complaint is false, then of course an inquiry is before, like there is an inquiry before any action is recommended. But there are many challenges in sexual harassment investigations, because sometimes the verification of facts become very difficult. Maintaining confidentiality of the woman is again a challenge. Human elements, sensitiveness, people, they don't want, the ladies, they don't want people to know, the world to know how she was harassed, because still in our society
the woman is always considered wrong. Because of this, they don't want to go, and just sometimes they leave it, and the people, they become more and more comfortable, and they start harassing in a more they start, they keep on harassing the ladies. So with this beautiful video, I'm going to end my today's presentation. Employee of the month twice in a row. Wow. Always knew you're the most hardworking employee of this company. But let me tell you one secret. Hard work जरूरी है, but break लेना और भी जरूरी है, वरना ब्रेक डाउन हो जाते हैं। See you in the office. ब्रेक लेना है तो बताना मुझे। What the hell? क्या है ये? छोड़ना यार। But सुन तो। This is the limit, Shreya. You can't ignore him every time. क्या करूं फिर? Hey Shreya, just give me 1 second to send this mail. Here, try these. They're really good. Thank you. I'm good. What? You don't like chocolate? I do, but Well then, have some. You deserve it. You won an award today. You did such a good job. thank you, Mom. I saw everything. He can't go around the office pretending he's a massage therapist. I know, but I don't know what to do about it. Has he done this before? Yes. Then we can't let him get away with this, Shreya. Okay? To be honest, I would love to see him choke on his coffee. I feel like punching his stupid face. I just want him to die. Okay. I feel you. But unfortunately, we can't do those things. Congratulations, sir. Congratulations. Congratulations, sir. So, what are we going to do about him? Congratulations, sir. You are the harasser of the month. You should have received it years ago, but we failed to acknowledge your talent. Don't worry, it's a start. But maybe we can give him a dose of his own medicine. Ta-ta. Speak up, don't stay quiet, and know this POSH Act. Thank you so much for being here and listening to me. Thank you so much. Over to you, Archana ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Shraddha ma'am. Really very informative and very knowledgeable session. Because जितने भी लोग अभी हम लोग इस सेशन में ज्वाइन किए हुए हैं, अदर वी आर मेल और फीमेल, वी ऑल आर वर्किंग, सो सभी के लिए एक बहुत अच्छा इंसाइटफुल सेशन रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं, हमने सुना है लेकिन हमें पता नहीं है, हमें पता है लेकिन हम जानना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें आज जानने और समझने को मिली कि हमें वर्किंग प्लेस पे किस तरह के एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट हम जाके अपने आप को सेव कर सकते हैं और उसके खिलाफ भी हम आवाज भी उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इट्स रियली वेरी यूजफुल। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करे हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी का अगर कोई भी आइदर फ्रॉम द सोनिया मैम और आइदर फ्रॉम द श्रद्धा मैम, किसी से किसी भी तरह का कोई भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
मैम आप लोगों ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हमारे पास एक्चुअली कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। सीरियसली एक कुछ वीडियो डालकर कुछ इस तरह से, किस तरह से आपने इतना, मतलब नो वर्ड्स में इतना ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। एक बहुत बड़ी क्लैप बनती है आप लोगों की। May I say something? Yes, sir. Please, please. Kudos to Sonia ma'am and Sharda ma'am. Sharda ma'am, I had been earlier a biology teacher too. And I spent 35 years, already I have spent 35 years in this line. And taking this topic, choosing POSH, that's why I was attracted to this. You know, I have to attend this. One thing I would like to add here, in all your act and all our speeches, both of you, rather including Archana, sorry Archana ma'am, you also included, emphasized on women being harassed. Really, I know even the gents are getting harassed, right? So Yes, you sir. must in further presentation or any time you include those also. Ashada ma'am was telling sometime in neutral gender, the person and those, it is there, it was there, but you have to include. It is not the harassment of one gender. Both the genders are getting harassed. Of course, Yes, sir. Yes. of course, major share goes to, of course, ladies. Sir, I would one like more to thing. answer this. for you. Ma'am, Yeah. one more thing which I have to catch the actually flight. I have to leave, but I wanted to Okay. share my view. Actually, one thing is very important. Make awareness is important, and boldness to say, if you are unfortunately, if you have been in this trouble, we have to make them bold enough to come out. You have to share these things. That's really Very true, wonderful. sir. Very true, Wonderful. sir. Very true, sir. Yeah. Wonderful. And thanks to Pai. Really thanks to Pai for choosing this. And all ladies, great presentation and nice sharing. Thank you very much. I have to Thank leave, you so much. otherwise I will miss my flight. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Well, I would take sir's query only. I'll answer it first. Sir, I'll come to you. Well, this act actually is for women. Sexual harassment, we are talking about how we can prevent women from it. And that is why we mentioned only the part of women. We do understand in the society that everybody is being harassed, be it any gender for that matter, be it a male or a female. They are being harassed, not only on workplaces, anywhere for that matter, we can take it. But we were talking about POSH, and we had to go as per the law only, what the act has and what the law and how it is made. So that is why we emphasized on the rights of a woman more on this. Yes, Sonia ma'am. Yes. Madam. Yes, sir. Yes, sir, please. It was a great session and we have learnt a lot. No doubt it is not a matter that you have discussed about the women or men. That is, but I feel proud today you have touched that all the offices were from IT sector, that was not from education sector. I salute you. And we are safe in our schools, and under PI we will be safe. I salute you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, can I say here? Yeah. Can I say? Sir, actually, this, like when even Sonia ma'am touched that topic, the workplace becomes different. Like, for example, I'm an employee of my school, but I'm going out to different place, and that becomes that my workplace at that particular time. If I'm harassed there also, and sometimes, of course, it happens even in the bus or anything, like, a bus is very, I should say, it's not defined, it's undefined. But if I go to a place not organized, like, there are some places which are very organized, like the public services, public buses and all, they are not organized. But if I'm going to a place where I'm going to present some about something, from my school side, and if like I get harassed there, then again it becomes my workplace.
So that is the thing like which we tried to cover here, sir. And That- I'm so I happy. feel proud that you have not taught education. I feel proud. I mean to say that you have taught. It is required at every step, at every moment, not only for us, for our kids, for our other relatives. You have updated us. I salute you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Ma'am, someone in the chat has asked for the PPT. We would like to say that as this is a constitutional act, it is a law. We would not be sharing the PPT what we have given as a presentation. We need to follow certain protocols, so PPT will not be available. Okay, ma'am. But recording will be available. Yes, sir. Yes. Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I would like to say that it was a great section and very informative. We all learned a lot, and as a head of institution, it's a great responsibility of everyone कि हमें एक ऐसा environment देना चाहिए कि हमारे जो employee है, they can come to us. If they are facing such type of problem, they can share to me or to those who are head of institution. So we learned a lot, and हमें भी इस चीज को further अपने employees को भी इस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू अर्चना मैम. थैंक यू सोनिया मैम. थैंक यू शारदा मैम. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am, somebody in the chat box mentioned it very nicely that हम लोग बच्चों को सिखाते हैं good touch and bad touch. अब हमें अपने offices और अपने work places पे भी ये चीजें सिखानी पड़ेगी staff मैम में. इनफैक्ट सोनिया मैम और श्रद्धा मैम, मैं अभी ये सेशन अटेंड करते हुए ड्यूरिंग दिस सेशन मैं क्या सोच रही थी कि जितने भी हम लोग प्रिंसिपल्स एंड जो भी इंस्टीट्यूशन रनर्स हैं, मेरे को लगता है एज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये बहुत जरूरी है इस तरह के सेशंस को टाइमली इंट्रोड्यूस करना अपने स्कूल्स में अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स. अगर वो कॉलेज लेवल पे है तो कॉलेज लेवल पे रेगुलर इंटरवल्स पे हमें ये सेशंस कराने चाहिए. और सोनिया मैम, श्रद्धा मैम, मैं तो जल्दी आपको इनविटेशन देने वाली हूँ इसके लिए, सो दैट आप मेरे बच्चों को भी वो अवेयरनेस और वो चीजें बताएं. बहुत सारी चीजें मैं कह रही हूँ ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग हमारे बीच ऐसे होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मतलब हमें पता है सब कुछ लेकिन हमें कुछ नहीं पता है. हम लोग रहते हैं कि नहीं वी नो एवरीथिंग, हमें पता है, हमने सुना था ये, पर हमने कितना सुना था और कितना उस बात को समझा था वो तब पता चलता है जब उसकी डेप्थ में हम जाते हैं. और क्योंकि सोनिया मैम और श्रद्धा मैम आज हमें उसकी डेप्थ तक लेके गए हैं, तो थैंक यू सो मच. और कोई मेंबर हमारा पाई फैमिली का जो अभी हमारे साथ ज्वाइन करे हुए हैं, सोनिया मैम और श्रद्धा मैम से कुछ पूछना चाहते हैं? अर्चना मैडम, हम सब हैं पर मानते नहीं ना. यस सर, बिल्कुल सही बात है आपकी. ये हमारी प्रॉब्लम है, हमें पता सब कुछ है पर हम मानते नहीं है. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, हमें अपने अधिकार पता है, कर्तव्य नहीं पता है. प्रॉब्लम यहाँ है. अगर हम कर्तव्य और अधिकारों को इक्वालिटी में लेके चलेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी. Really, no doubt. एनीवन? यस मैम. एक One thing more, ma'am. One thing more. Actually, सबको इतना कैजुअल लेने की हैबिट भी हो गई है ना कि चलो let it be. हर चीज को हम let it be करते हुए चले जाते हैं. अर्चना मैम ने भी जैसे आपने भी जैसे कहा एंड सोनिया मैम ने भी बताया एंड एज वेल एज शारदा मैम ने भी जैसे कहा कि हमें बिगिनिंग में ही अगर उस चीज को हमें स्टॉप करते हैं तो आई थिंक इट्स बेटर. एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर, हम अपने स्कूल लेवल पर भी हम देखते हैं. एज अ टीचर तो हम लोग एज अ क्लास टीचर हम लोग ये इस टाइप की नॉलेज देते भी हैं. बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस का ये जो लिंक है ना, ये अभी बहुत वीक है. इसका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना हम स्ट्रांगली लेवल पर इसे नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ये चीज मैम स्कूल लेवल पर भी इतनी इंपॉर्टेंट है, कॉलेज लेवल पर भी और एज वेल एज ये हमारे वर्क प्लेस पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये लेट इट बी की जो हैबिट है ना, आप सबके लिए तो आपका स्कूल और इंस्टीट्यूट भी वर्क प्लेस ही है ना मैम. एग्जैक्टली मैम. हैज इक्वल अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस. यू नीड टू बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा. वही जो चीज है ना कि लेट इट बी, तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए. अगर सभी एक साथ मिलकर अगर इस चीज को अपोज करें ना, आई थिंक इट शुड बी कन्वर्ट इन अ बेटर प्लेस. रियली मैम, सोनिया मैम और श्रद्धा मैम, इसे स्कूल में तो मैम पॉस्को एक्ट के तहत ये वेबिनार्स और सेमिनार्स कराना इट शुड बी कंपलसरी. हम लोग कराते हैं मैम. एग्जैक्टली होना भी चाहिए मैम, ये कंपलसरी होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल मैम.
मैम हम लोग बॉक्सो ऐप तो फॉलो करते हैं. वेरी गुड इवनिंग टू POSH को एवरीवन. yes. फर्स्ट ऑफ ऑल I am down with fever from last 3 days, since last 3 days, but I could not resist to attend today's webinar because 2 of my good friends are there to present themselves. Okay, so first of all, Sonia ma'am and Sharda ma'am, I would like to give one title to both of you. It was a fire and ice presentation. At the one hand, Sonia ma'am was doing firing, and on the other hand, Sharda ma'am has taken the session on so ease. So I liked both of you. So fire and ice will be your title from today onwards. And Done, ma'am. so ma'am, one thing I would like to share here, like in the middle section in my school, Shakespeare is introduced. Like we teach them Shakespeare, different novels are being introduced there from grade 6 to 8. So parents started complaining because Shakespeare is an author of the romantic era. He writes in a romantic way. He is a romantic author or a poet, we can say. So all of a sudden, management has decided to stop teaching Shakespeare. And being a subject head, I do not actually liked that time why to stop anything like that. He was such a great author. So ma'am, rather than bringing changes in our own personality, being an educator, we are just taking our hands away from such things. तो जैसे कि आप लोगों ने कहा और अभी कुसुम मैम ने, प्रियंका मैम, एवरीवन हैज शेयर्ड देयर ओन व्यूज. तो हम वैसे तो हम पर्सनली तो हम चाहते हैं कि ये चीजें इंट्रोड्यूस हो, पर कहीं ना कहीं वी आर बाउंड या हम भी स्टेप अहेड नहीं कर पाते हैं फॉर सच थिंग्स. उसी कंडीशन में ही रह जाते हैं. कुसुम मैम हैज सजेस्टेड लेट इट बी. वहां पर हमें लाइक वी हैव टू स्ट्रेंथ टुगेदर अगेंस्ट सच थिंग कि अगर एक दो पेरेंट कह रहे हैं रोमांटिक है तो मैम उसमें क्या है शेक्सपियर में. तो मैम ये छोटी छोटी चीजें ना एजुकेशन सेक्टर में भी होती हैं, और सबसे जो एडुकेटेड सेक्टर एडुकेशन ही सेक्टर माना जाता है मैम, और उसमें ही हम लोग अपनी ही चीजें नहीं फॉलो कर पाते हैं समहाउ. तो वी आर ऑल्सो बाउंड. तो इसके लिए भी मुझे लगता है कि पाई को ही एक स्टैंड ले लेना चाहिए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन सेल्फ. पहली बात तो शेक्सपियर के सारे जो नॉवेल्स लिखे गए हैं वो सारे रोमांस पे नहीं है. ऐसे कई ट्रेजिक भी है. हाँ, ट्रेजिक भी है. ट्रेजिक होंगे लेकिन सारे रोमांस पे नहीं है. उसके काफी अच्छे हम लोगों के पास नॉवेल्स है जो बच्चों को स्कूल में करवा सकते हैं. और लिटरेचर है मैम, हम उस इंटेंशन से क्यों देखते हैं कि ये क्या है, हम उसको टैग क्यों कर रहे हैं. हमें तो उसे लिटरेचर के फॉर्म में लेना चाहिए, तो हम उसको उसी फॉर्म में ले. बट मैम सोनिया मैम, इट वाज द सजेशन फ्रॉम फ्यू ऑफ द पेरेंट्स. लाइक उसके कुछ एक्ट्स में अगर कुछ था सो मैम which story of Shakespeare were you following? Ma'am, we are following Macbeth also, and Macbeth and Julius Caesar. Julius Caesar नहीं है मैम. Julius Caesar नहीं है. Macbeth लगा हुआ है. You can take stories like King Lear. You can take stories King like Lear Julius है Caesar. मैम. They are not on romance. King Lear and his 3 daughters. The complete. But ma'am, I don't know from where the parents have got this notion that they went to the management regarding such things, and management had, because we can say the parents are our customers, तो हम customer को नाराज भी नहीं कर सकते. तो just because of that only. पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेना चाहिए था स्कूल में और पेरेंट्स को समझा देना चाहिए था rather than stopping such practice in the school. Very yes. तो मैम कहीं ना एक स्टैंड लेने का मन भी करता है पर बाउंड हो जाते हैं. जो मेरे पर्सनल व्यूज थे बीइंग अ सब्जेक्ट हेड, तो यही थे कि हमें एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेना चाहिए था. नहीं, अब तो कंपलसरी हो गया ना. हमारे पास शारदा मैडम और सोनिया मैडम है. एवरी स्कूल मस्ट कॉल देम एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर अस. Anytime, sir. Anytime. Please let us know. We will surely come. I got it. From your side, I got your devotion and dedication toward that one. Sure, sir. Thank you, sir. Thank you. Actually, मोदी जी जैसी फीलिंग आ गई कि जैसे वो एक बात के लिए स्ट्रेस करते हैं, आज आपने भी करा कि आज ये इनको पढ़ा करके ही छोड़ना है और इनको सिखाना है कि इसके ऊपर अलर्ट हो जाए. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, Priyanka ma'am. Anyone? हाँ, सबसे पहले तो मैं पाई को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ
कि ये मंच लाकर आपने इस मंच पर जो सोनिया मैडम और जो शारदा मैडम ने जो कहा वो वास्तव में एक रियल हकीकत बताई है इन्होंने। और हकीकत बताते हुए जो आज का जो नारी का जो हरासमेंट हो रहा है, इसके लिए कई ऐसे एक्ट भी बने हैं, मगर एक्ट बनते हुए भी नारी एक सांत्वना की मूर्ति है, एक धीरज की मूर्ति है। और धीरज की मूर्ति होने के कारण ही उसको अपन इंडिया में भी कहते हैं कि भी लेडी फर्स्ट, ठीक है ना। तो लेडीज फर्स्ट का कारण ये है कि वो एक सांत्वना और धैर्य धारण करने वाली एक मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर अपन हर समाज के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी स्कूल के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर अपन नारी का सम्मान करेंगे, नारी के साथ में जो नारी की भावनाओं से जुड़ते हुए उसकी मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से ये आपने जो सही कहा है सोनिया मैम और शारदा मैडम है कि हकीकत यहाँ साक्षात होती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो बताए, वीडियो से ऐसा दृष्टि मतलब ऐसी दृष्टि डाली जाती है उसमें कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर हो रहा है तो उसको उसके लिए कानून भी बने हुए हैं, कानून के तहत उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वैसे आपने मैडम ने जो ये इम्प्रेशन एक ग्रेविटेशन पावर डाला है इस पे, तो वो बड़े ही शानदार वास्तव में आपने जो बताया वो काबिले तारीफ है कि नारी के साथ में जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है वो नहीं होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष रूप से तो अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं कि उन्होंने जानबूझ के किया है, मगर अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से अगर होता है तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे दोनों का सोनिया मैम शारदा मैम दोनों का जो स्पीच था वो काबिले तारीफ रहा। आपका वो समय समय पे ओजस्वी रूप भी आया, कभी ओजमे भी हुए आप, कभी सरस भी हुए आप और कभी सरलता में भी आए, और सरलता में आते हुए नारी को जो हरासमेंट हो रहा है उसका व्याख्यान आपका बड़ा ही शानदार था, बड़ा लाजवाब था। क्या कहूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू फॉर योर काइंडनेस एंड अदर ये वुमेन हरासमेंट। तो इसके लिए अपन सबको मिलके ये काम करना पड़ेगा। देखो जिसमें भावना होती है, अपन जैसे प्रतिज्ञा भी है कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, तो मेरे ख्याल से एक को छोड़कर सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। बहुत ही प्रतिज्ञा के अंदर भी रखा हुआ है, तो फिर हमको इस पे हमको भी सीखना है और दूसरों को भी सीखना है। ये जो आपका इम्प्रेसिव सेशन रहा, एक आपकी परफॉर्मेंस रही बहुत ही शानदार रही, और मैडम ऐसे परफॉर्मेंस करने के बाद में आप किसी का अनुकरण करेंगे, हम किसी का अनुकरण करेंगे, और ये अनुकरण हमारा और कई जगह जाएगा, तो वो उस आकर्षण से कुछ न कुछ सीखेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आपको आपका अभिनंदन है कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। भाई को भी धन्यवाद, सोनिया मैम, शारदा मैम, अर्चना मैम, प्रियंका मैम, रमेश जी सर, प्रियंका जो भी मेरे सामने दिखे थे, सभी का धन्यवाद है। और ऐसे और भी सेशन लेते आइए आप, और जैसे जैसे आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो मेरे ख्याल से एक नई समाज का निर्माण जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sonia ma'am, for choosing such topic because you are the head of the virtual event. Thank you, ma'am. Thank you. मैम एक्चुअली वो लिंक जो आपने अभी सेंड किया है ना, तो उसमें अलग से एक लिंक आ रहा है जिसमें आपको करना है, तो कुछ लोगों का लिंक जो है वो खुल नहीं रहा है, तो उनको ये एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे वो खुल। मीनाक्षी मैम ने शायद लिंक शेयर किया है ना, मीनाक्षी मैम ने? Actually, that link is directing to another link. Oh, it can be open. Just see, I have opened it. Yes, it's working, ma'am. The It's link opening. that Sharda ma'am has shared is opening directly. Click on that link. It's in the chat This one, box. you can see you have to fill these things. सोनिया मैम,
Can I end the session? Yes, yes, ma'am, sure. Okay, now as we come to the end of the session, I would like to thank our speaker for today's event, Shraddha ma'am and Sonia ma'am. They will give the insight of the POSH Act and also a gratitude all the members who present with us today in this platform. I think it's very, very, very knowledgeable session for all of us. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Same to you, Thank ma'am. you, All ma'am. of you have a safe and Thank nice you. weekend. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everybody.